हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू कॉस्मिक हीलर। इस चैनल पे आप सबका बहुत सारा स्वागत है। ओके, सो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द टाइटल और द thumbnail or what the reading is going to be about. Okay, I'm totally blank, but I just felt a heavy energy and I just felt like there might be some guidance for someone over here too. Okay, so the video is going to be in Hindi plus English. Okay, so it's going to be in Hinglish if that's a word. So I don't know what the message is going to be, but I know it's going to be for someone because the calling is very strong. Okay, so we just start shuffling, and how the guidance comes up, that is going to determine the title of this one particular video. Okay, 5 of Cups in reverse. Let me just take out some cards. Okay, also if you want the video to be in one specific language, then you could just tell me in the comment section below. ठीक है, 7 of Wands. It's meant for someone. ठीक है, अभी ये जिसको भी meant है उस तक ये पहुँचेगा, उसकी एनर्जी ऐसी है because I'm feeling a lot of heavy energy. 10 of Swords, then we have Ace of Swords. Okay, so somebody over here is releasing their past sorrow. There's this heavy shift happening. Okay, you are releasing your past sorrows, disappointments, regrets. You are just releasing what is not serving you anymore. ठीक है, and this shift is not happening in terms of anything external. This shift is happening in terms of internal. ठीक है, इंटरनली ये शिफ्ट हो रहा है, एक्सटर्नली ये शिफ्ट नहीं हो रहा है। इसलिए हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा मूड चेंज होते रहना, मूड्स के फ्लक्चुएशंस होते रहना। सडनली यू आर फीलिंग सैड, सडनली यू आर फीलिंग एंग्री, frustrated, because these shifts are taking place internally, but you are releasing your past sorrows, your pain, your disappointments, and your regrets. That is like you are trying to forgive someone who has wronged you in the past. You have tried to forgive someone who has genuinely wronged you in the past. Okay, so ये जो आज का मैसेज है ना, आज की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली आ रही है कि अगर आपने ये करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप करोगे। ये शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा आने वाले 10 दिनों में, हो सकता है आने वाले 5 दिनों में, 5 हफ्तों में, 10 हफ्तों में। आई एम नॉट गोइंग टू बी नेमिंग एनी टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि ये इंटरनल जर्नी है, हर किसी की इंटरनल जर्नी अलग होती है। बट आप ये करना स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, जो भी ये पर्सन देख रहा है, यू आर रिलीजिंग योर पास्ट सॉरोज, पेन, डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट्स, अ लॉट ऑफ हैवी एनर्जी आई एम सेंसिंग। आपको किसी ने धोखा दिया है, उसको भी आप फॉरगिव कर रहे हो। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन सबको आप फॉरगिव करना स्टार्ट करोगे। उन लोगों के लिए नहीं, आपके अपने लिए। आपके अपने लिए आप उनको फॉरगिव कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को उस बर्डन से रिलीज़ करना चाहते हो। आप चाहते हो दैट यू जस्ट फील रिलैक्स्ड नाउ, यू वांट हीलिंग। आप बहुत टाइम से हो सकता है कि हीलिंग मांग रहे हो स्पिरिट गाइड से, एंड वो आपको इनर हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी इनर हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ओवर हियर. Okay, you are going to practice a lot of forgiveness. You are going to practice forgiveness for your own self. You are going to be practicing forgiveness to others. You are just practicing a lot of forgiveness, क्योंकि आप चाहते हो कि आप पास्ट की सारी एनर्जीज को लेट गो करो। एंड अभी जैसे आप लेट गो करोगे ना, आप फ्यूचर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ये अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ करियर हो सकते हैं, एजुकेशन हो सकते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ अ न्यू पर्सन एज वेल। आप पास्ट की एनर्जीज़ को अभी इंटेंशनली, वॉलंटरीली हील कर रहे हो। आप चाहते हो, आप लेट गो कर रहे हो। भले ही सामने वाले ने आपसे माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन फिर भी आप उनको माफ़ कर रहे हो, क्योंकि आप अपने एनर्जी को रिलीज़ करना चाहते हो, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना चाहते हो, ताकि आप अपने लाइफ में एक
न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन, न्यूनेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। आप you are ready to step into your next chapter, and that next chapter is going to be so good, so good, so good that it's just going to wash away every pain you felt in your past, every pain. ठीक है? And you are working hard for it. It's not like you're not working hard. आप अपने आप को, you know, it's very difficult to forgive somebody जिसने आपके साथ गलत किया है, एंड वो इंसान आपसे माफ़ी भी नहीं मांग रहा है। ऐसे इंसान को माफ़ करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत टफ होता है। ठीक है, बट आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, आप कॉन्शियसली ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे आपको आप रिलीज़ हो जाओ, उस नेगेटिव बर्डन से रिलीज़ हो जाओ जो नेगेटिव बर्डन आप तक अभी तक था। ओके, आप पे अभी तक था, बिकॉज यू वर फीलिंग अ लॉट मोर बर्डन्ड, अ लॉट मोर बर्डन्ड। whoever is watching this, you are ready, you are ready. Okay, you are ready, you're preparing yourself for whatever is coming, you're preparing yourself for whatever is going. You are just working hard upon your own self, and that is something really wonderful. And I'm so I just want to give you a hug, whoever is watching it. I just want to give you a hug because it's not easy. Okay, it's not easy to heal something consciously, to try and heal something. It's not a very easy thing. Okay, यहाँ पर you need to be confident upon yourself. That is the guidance coming for you. If you are doubting yourself, if you are constantly under this perception that am I doing it right, am I doing it, because people might try to, did you just see, it's a confirmation light just flickered. Okay, I take everything as a sign. Okay, so if people are trying to demotivate you, जब भी हम सेल्फ हीलिंग की जर्नी पे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी हीलिंग देख नहीं पाते। ठीक है, नहीं देख पाते, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना ट्राई करते रहते हैं। बट let me just tell you, your spirit guides and the divine is proud of you. Okay, if you are working upon yourself, and even if you're not working upon yourself right now, you're going to start working upon yourself. You are going to start practicing forgiveness. You are definitely going to start practicing forgiveness. Okay, and you are going to release yourself from the past burdens, disappointments, regrets. Okay, and you are walking towards new opportunity. Ace of Swords is telling me that you are creating something major, you're creating something new, you're creating space for something new in your life. This new could be a person, this could be foreign settlement, foreign education, you're just going, you're creating something that is going to be serving you in the long time. Okay, and you're creating space for that, you're creating space to welcome that in your life. And by releasing this, लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर आपको बोला जा रहा है कि यार ये क्या कर रहे हो, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये क्या चीज़ें कर रहे हो, या अगर आपका नेचर अभी ऐसा हो गया दैट यू आर नॉट टेकिंग BS फ्रॉम एनीवन, okay, you're not tolerating anybody's crap now, so people are going to come up to you and say कि यार तुम तो चेंज हो गए हो, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो. But this is the personality your spirit guides wanted you to develop. In the past, you might have been a sort of person who was very sensitive, who was very, would just seek validation from everyone. But now, right now, your spirit guides are so proud of you because you're releasing all those patterns. You're releasing all those patterns, and they exactly want you to do that. They want you to do that. So if anybody is telling you, coming up to you and saying, यार तुम तो बदल गए, तुम पहले ऐसे नहीं थे, तो ये बदलाव ज़रूरी है आपके लिए. Okay, let those people go who are not happy with the change, because this change is going to bring you something great, this change is going to bring you something good. You are made of the magic of the cosmos, exactly, and now you are understanding that. Okay, you are now understanding that what you're made of, and you're starting to value it.
Okay, so this is a very strong message. I know it's a very strong message, but you are now understanding that you are made of magic, whoever is watching it. पहले आपको ये समझ में नहीं आता था. पहले you would feel like, oh, what kind of person am I? You would constantly be in self-doubt, and people have hurted you a lot in the past. Okay, they, like, you were constantly in the self-doubt because of these people around you. These people destroyed your confidence. These people just destroyed everything. But now you're regaining your energy back. Now you're rebuilding yourself. And जब आप अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हो, जब आप अपने आप को वापस से क्रिएट कर रहे हो, रिक्रिएट कर रहे हो, इस टाइम पे ऑब्स्टेकल्स बन के बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनको आपका अच्छा देखना नहीं है, जो आपको अच्छा करते हुए देखना नहीं चाहते. ठीक है, समटाइम्स विक्ट्री बिफोर इट बिकम्स एक्सटर्नल, इट्स ऑलवेज इंटरनल. ठीक है, इंटरनली आपको पहले विक्टोरियस होना पड़ता है एक्सटर्नली आपकी विक्ट्री दिखने के लिए. तो आप वो काम कर रहे हो, एंड स्पिरिट गाइड्स आर एक्सट्रीमली 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 प्राउड ऑफ यू with what you are doing. Okay, so even if you are not getting, or even if you are not listening, or even if nobody is telling you, people are just constantly trying to put you down, constantly tell you कि ये क्या कर रहे हो, तुम तो बदल गए हो, अपनी पर्सनालिटी तुमने बदल दी है. Don't listen to it. This is the message. Your spirit guides are extremely proud of you. Okay, just keep going with this pattern. Release yourself from all the past regrets, disappointments. Keep healing yourself, and you are attracting better things in your life. You sure are attracting better things in your life. Okay, so yeah, that's it for the channelized message. I hope that whoever is meant to listen to this gets this message. Okay, I feel like hugging you guys. Okay, so I'm sending you all a virtual hug. Okay, so that's it for the message. I'll see you all in the next psychic reading, in the next channelized message. If this is resonating with you, you are doing great. Be proud of yourself and keep going. Okay, keep healing yourself, keep forgiving, release yourself from the past burdens, from the past hatred, regrets, and all that stuff. Release yourself from all the negative people in your life. Okay, because those people are no longer serving you. Okay, so I'm very proud of you, very, very proud of you. I'll be seeing you all next time with another channelized message. Bye bye, take care.